हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब इस वीडियो पे मैंने टेलीग्राम चैनल पे कुछ क्वेश्चंस क्विज जैसा क्विज इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस क्वेश्चंस पूछा था, तो उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। कुछ लोग करेक्ट आंसर किया था, कुछ लोग रॉन्ग आंसर चूज किया है, तो आई विल गिव यू अ डिटेल्ड सॉल्यूशन फॉर दोज क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, for a sandy soil with soil grains spherical in shape and uniform in size in its loosest condition, what is the percentage of volume of voids with respect to volume of soil पूछा है। तो पहले सॉइल ग्रेन्स कैसा है, स्पेरिकल शेप है एंड यूनिफॉर्म इन साइज, इट्स आइडियल कंडीशन। प्रैक्टिकल में ऐसा ऐसा नहीं होता, इट्स परफेक्टली स्पेरिकल शेप में नहीं होता और यूनिफॉर्म साइज में नहीं होता, इट्स आइडियल कंडीशन। ठीक है, सो द स्पेरिकल साइज ऑफ द सॉइल ग्रेन्स आर आइडेंटिकल और वो भी स्पेरिकल शेप है। सो वी नो इट्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इस तरफ का पैकिंग है मतलब इट्स ए क्यूबिकल पैकिंग, क्यूबिकल एरे पैकिंग, दिस कंडीशन विल गिव यू लूजेस्ट कंडीशन, losest packing. This will give you loosest packing. This will call as cubical array. We name it as a cubical array. And if the spherical particles, spherical solid particles are arranged in this way, this is called a diagonal array or rhombohedral packing. So this will be the densest packing and this is the loosest packing. This is the loosest packing and this is the densest packing. Okay, so in case of loosest packing, if we calculate, we can calculate it numerically, we can calculate it. The E max, or you can say E will be, which is nothing but E max, as this is the loosest case. So in this loosest case only you will get maximum void ratio. Okay, that void ratio is nothing but 0.91. That void ratio is 0.91, and in this case you will get E minimum, which will be equals to 0.35, which will be equals to 0.35. We can calculate it mathematically, we can calculate it, but here it's not necessary. You have to remember these two. Okay, objective point of view, these two are very important. So यहाँ पर लूजेस्ट केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लूजेस्ट केस के बारे में क्वेश्चन पूछा है। सो इन केस ऑफ लूजेस्ट केस, दैट इज नथिंग बट क्यूबिकल एरे of spherical particles. So in case of what he is asking percentage of volume of voids with respect to volume of soils, that is volume of voids with respect to total volume of voids with respect to, यहाँ पर void ratio का मतलब क्या है? void ratio मतलब E is equals to volume of voids with respect to volume of solids, that is nothing but 0.91. अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम का मतलब क्या है? पोरासिटी. सो पोरासिटी इज इक्वल्स टू ई बाई 1 प्लस ई, सो दैट इज 0.91 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.91, विच इज इक्वल्स टू 0.91 डिवाइडेड बाई 1.91. यू विल गेट 47%. यू विल गेट 0.7%. सो यहाँ पर डायरेक्टली पोरासिटी का टर्म नहीं दिया है, पोरासिटी का प्लेस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल का रेशियो पूछा है. ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल पूछा है. सो यहाँ पर 3 थिंग्स हमको पता होना चाहिए. लूजेस्ट पैकिंग का मतलब क्या है? क्यूबिकल एरे है. अगर डेंसेस्ट पैकिंग पूछा है, इस पे डेंसेस्ट पैकिंग पूछा मतलब डायगोनल पैकिंग और रैम्बोहेड्रल पैकिंग को चूज करना है, और वहां पर वाइड रेशियो कितना होता है? 0.35. ओके, यहाँ पर लूजेस्ट पैकिंग पूछा है. लूजेस्ट पैकिंग में क्यूबिकल एरे पैकिंग होता है, यहाँ पर वाइड रेशियो विल बी 0.91. सो फ्रॉम वाइड रेशियो यू कैन कैलकुलेट porosity. Okay, so option will be option B is correct option. Okay, so the next question is, next question में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? इफ ए पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल poured into
a cylinder with full water, then the volume of water displaced will be equals to. So this is related to water displacement method. Water displacement method use करेंगे soil mechanics में. So from that concept यही क्वेश्चन पूछा है, इस तरफ का क्वेश्चन पूछा है. So from a partially saturated soil sample, अगर partially saturated soil sample है एक, उसको एक सिलेंडर में डालेंगे, इट्स फुल ऑफ वाटर, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी, दैट इज फॉर सपोज आई हैव ए सिलेंडर एंड इट इज फुल ऑफ वाटर, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर. हम क्या करेंगे, अभी एक सॉइल सैंपल लेंगे, इसके अंदर सॉइल डालेंगे विच इज पार्शियली सैचुरेटेड, विच इज पार्शियली सैचुरेटेड. अब पार्शियली सैचुरेटेड सैंपल को अंदर डालेंगे तो some volume of water will be displaced, some volume of water will be displaced. So this volume of water will be equals to what? Volume of soil होगा या volume of solids होता या volume of solids plus volume of water present in the soil और complete total volume of soil किसको equal होता है. ठीक है, तो पहले I have a cylinder like this and it is completely filled with water. अब हम we drop a stone here, we drop a stone, let's assume this is a stone and we drop a stone of volume V. Okay, then water displaced will be equals to volume of the stone. In this case volume of water displaced will be equals to what? Volume of water displaced will be equals to volume of the what? Volume of the stone. Stone volume को equal होता है. ठीक है, so in this case what happened, the soil is not completely packed. What I mean to say, this soil is partially filled with solids and it is partially filled with solids and it has some voids. These voids are filled with water and air. These voids are filled with water and air. अब हम soil को अंदर डालने में क्या होगा, इसका soil के अंदर जो भी air है वो escape हो जाएगा. Okay, soil का अंदर जो भी voids है which are filled with partially with water and partially with air, water तो इस water में join होगा, लेकिन air क्या होगा, air तो escape हो जाएगा, air क्या होगा, escape हो जाएगा, लेकिन पानी तो इसका water को displace करेगा. जो water soil का voids में है वो water क्या करेगा, इसको water को displace करेगा. Solids जो है वो भी water को displace करेगा, लेकिन जो air है voids में जो air है वो क्या करेगा, वो escape हो जाएगा. It will escape from the water. Okay, so the water displaced will be equals to volume of solids plus volume of water that is present in volume of water present in soil, volume of water present in soil voids. अब volume of एयर जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो प्रेजेंट हुआ था वाइड्स पे वो तो एस्केप हो जाएगा, वो वाटर को डिस्प्लेस नहीं करेगा, वो एस्केप हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज इन केस ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल. इफ ही मेंशंस दैट इज ए कंप्लीटली ड्राई सॉइल, ओके, अगर इफ द सॉइल इज कंप्लीट ड्राई सॉइल, if he has mentioned completely dry soil, what will happen, the volume of water displaced will be equals to volume of solids. क्यों, उसमें तो पानी नहीं है, the voids are completely filled with air. Then if the dry soils, अगर ड्राई सॉइल को पानी में डालेंगे क्या होगा, सॉलिड्स तो वहाँ पर सेटल होगा, लेकिन जो एयर है वाइड्स में वो तो एस्केप हो जाएगा, वो तो स्पेस नहीं लेगा पानी के अंदर. So then what will happen, the volume of water displaced will be equals to volume of solids. अगर it is completely saturated soil, अगर he has mentioned the soil is completely saturated, completely saturated का मतलब क्या होगा, the voids are completely filled with water, मतलब there is no air present in the soil, then the volume of water displaced will be equals to volume of soil, volume of soil. ठीक है, the volume of water displaced will be equals to volume of soil. ठीक है, ये तीन तरफ का क्वेश्चन है. पहला, अगर ड्राई सॉइल है then the volume of water displaced will be equals to volume of solids. अगर completely saturated then the volume of water displaced will be equals to volume of soil. Agar it is a partially saturated, that means the voids are partially filled with water and with air,
then the volume of water displaced will be equals to volume of solids plus volume of water that are present in the voids of the soil. Okay, so this is a important question. We use the same concept in water displacement method in calculating the unit weight of the soil. In that unit weight of the soil में हम क्या करेंगे, इस soil को, soil sample जो भी soil sample है हम लेंगे, इस soil sample को एक कोटिंग देंगे. कोटिंग देने से क्या होगा, इसका अंदर जो भी एयर है वो एस्केप नहीं होगा, वो एस्केप नहीं होगा पानी में डालने में, वो एस्केप नहीं होगा. इट एक्ट्स एज ए impermeable coat such that the voids that are present, or you can say the air that is present in the air, the air that is present in the soil will not escape when it is dropped in the water. Okay, so in that case what will happen, अगर यही क्वेश्चन पूछा है, मतलब एक पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, अब हम वही पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को एक कोटिंग दिया हुआ है, एक इम्परमेबल कोटिंग दिया हुआ है, वही इम्परमेबल कोटिंग देके पानी के अंदर डाला है, then the volume of water displaced will be equals to volume of soil plus volume of that impermeable coating. Okay, क्यों volume of soil ले रहा हूँ, even though that is partially saturated soil, वहां पर voids escape नहीं होगा पानी के अंदर डालने से, वहां पानी के अंदर डालने से जो भी एयर फिल हुआ है voids में वो escape नहीं होगा due to that impermeable coating. ठीक है, so that is the option here is option D is correct option, that is 45% सही आंसर सेलेक्ट किया है. Now the third question is, a soil sample having specific gravity of solids, that is G is equals to 2.60 and void ratio is equals to 0.78, the water content in percentage required to fully saturate the soil at that void ratio. What will be the water content? That is required to completely saturate the soil? That is, degree of saturation is 100%, or you can say take it as 1. Okay, so there is some simple relationship, that is SR is equals to GW by E. We use this simple relationship. Here I want to discuss one thing. अगर void ratio change होगा नहीं होगा, let's take this is 2.60 and this void ratio is fixed, and at this point at some 50% of degree of saturation we have some water content, at some water content it is 50% saturated. अगर इसको 100% saturation लाने में we keep on adding water. अगर water add करने से degree of saturation तो 100% हो जाएगा, लेकिन void ratio में changes होगा या नहीं होगा, we cannot say that. That's why he has clearly mentioned at that void ratio. अगर इस term नहीं दिया हुआ, अगर इसने बोला due to adding of water volume void ratio changed to some E2, we have to take that E2. Okay, यहाँ पर clearly mention हुआ है due to adding of water void ratio change नहीं हुआ है. तो what we do is, here we take degree of saturation 1 and that is 1 into E value क्या लेंगे, E is equals to 0.78 is equals to G कितना है 2.6 into W water content we have to calculate. So that water content you will get 0.3, which is nothing but 30% water content होना चाहिए. Then you will have saturated soil. Okay, these are the 3 questions I have asked in my Telegram channel. Okay, I will keep on posting more questions, and I will discuss those questions in detail in videos like this. So if you find my quizzes or videos helpful, please subscribe to my channel and please join to my Telegram channel. I have given the Telegram channel and my links in this given video below. So please subscribe to my YouTube channel. Thank you.